Hello and welcome to the continuation of Velence Bond Theory. We have discussed hybridization, the orbital concept of covalency, pure overlaps, overlap of pure atomic orbitals. When there is an overlap which is head-on or direct in the same direction, then that gives sigma bond. And if it is in a sidewise or lateral manner from pure atomic orbitals which are lying perpendicular to the plane of the hybrid orbitals, they simultaneously undergo sidewise overlapping along with sigma bond, which is formed by direct overlapping. And that pi bond, as we saw in case of acetylene, we have py, py, pz, pz, forming 2 pi bonds. And in hybridization, it's just a theory to explain how, in terms of orbital concept, we can explain the geometry, the shape, the bond angle, these things. So, to continue hybridization, we have our sp3d, and at the same time, let me tell you dsp3 together. This is normal. In normal molecules having no transition metal complex, this is a very unusual situation, complex. So let's take an example of PCl5 having steric number 5. The hybridization is ought to be sp3d or dsp2. So phosphorus in the excited state being the sister of nitrogen, the s electron has already gone to the d. I am not showing you the ground state. Already the lone pair has been unpaired. One has gone to the 3d. This is 3p. This is 3s. And we have now 5 unpaired electrons. 1 in s orbital, 3 in p orbitals, and 1 in d orbital. Now, since px, py, pz, they lie along the axis, and among the 5 d orbitals, dx square minus y square have 4 lobes lying along axis. dz square only in z axis, the other torus is being smeared in the xy plane. Some of them are also lying away from the axis. So the best d orbital which is capable to mix well because they are in the same direction is d x square minus y square. Only one. So these 5 mix. Therefore, the name of the hybridization is sp3d to produce 5 hybrid orbitals directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal TBP geometry that you already know. Here, only the difference is you have to draw orbitals. Supposing this is a equilateral triangle, phosphorus is here, and the 3 hybrid orbitals will be lying along the, lying on the plane directed towards the 3 corners of an equilateral triangle, and the other hybrid orbitals will be, one is up, the other is down. These are 2 orbitals. These are called axial orbitals, which are lying perpendicular to the plane of the triangle. They are little longer. Therefore, each of them carries unpaired electrons. And chlorine with its
unpaired electron present in the p orbital, it need not have to use hybrid orbital. There is no necessity at all, because it will need only so 5 chlorine atoms comes in the respective directions and overlap with the p or p orbitals. So it's a kind of sp3d. All the 5 orbitals are mixed orbitals, hybrid orbitals, and chlorine, the ligands or the peripheral atoms, use pure p orbitals, which contains the unpaired electron, and form, as you know, 5 covalent bonds. 3 directed towards the corners and 1 up, 1 down. And if we join the triangular corners to the top, you have 1 pyramid, trigonal pyramid. And same thing if you do to the bottom, you have another downwards pyramid, hence trigonal bipyramidal. And you know what will happen if one lone pair is there, where it will sit and where it will be ghostified. I mean, I'm just kidding. And therefore, all these things you know. And these are called the axial bonds. And these are the equatorial bonds. They are different. Equatorial. These are longer and weaker. These are stronger. And therefore, the bond lengths, as we shall study in our bond length program, you will find little different bond length. You will find slightly different. Therefore, when you heat PCl5, then these 2 chlorine goes away as chlorine gas, leaving behind PCl3. It gives PCl3 plus Cl2. So these goes and these goes. They are because they are little longer and weaker. And then comes DsP2. DsP2 is in complex molecules, which will be discussed transition metal complex in details in class 12. But I can show you a glimpse of it, because when you solve problems from any book, JEE book or such books, you will also find everything together. They cannot isolate DsP2 and D2, DsP3. No, oh, I'm so sorry. DsP3, sp3d, DsP3. Therefore, I am saying the classic example is this transition metal iron pentacarbonyl, where iron enjoys an oxidation state of 0, because carbon monoxide is neutral, and therefore iron is in the 0 state. But there is bonding, and these bonds are all sigma bonds, but dative bonds. And carbon has, as I've shown you the structure of carbon monoxide, carbon has a lone pair on its head. So it shows, it attacks, it bonds with carbon, not oxygen. And what happens here, if I write down what really happens in iron is 4s2 3d6. Forget about argon configuration. We are interested in the valence shell. As I told you, the n-1 electrons, if at all it is incomplete, they act as pseudo valence electrons. They may not be theoretically the last shell, but they act as valence electrons because they participate in bonding. So if you open this D and apply the
Hund's rule, Hund, then poly, and for S2. Since iron is in the zero state, all the 2 electrons are present. This is 4s, this is 3d, n minus 1. Therefore, d is written first. Then p is vacant. I'm sorry. Now, what happens? You have to make one d orbital free. How it will be free? We have 4 to 6 electrons. So these electrons have to come here. So before bonding, these 4, 2 of them in one room, 2 of them in another room, and these 2 of them in third room. And the fourth room will be made vacant. See what happens. These 2 comes to this room, these 2 comes to this room, and these 2 comes to this room. So one d orbital is made vacant when bonding happens. This is free, these are already free. So this is d. Obviously, x square minus y square has to be made free because the lobes are in the direction of axis, px, py, pz. We need only one d and all the 3p and the hybridization will happen. d sp3 even with the vacant orbitals. So iron atom will land the same type of hybrid orbitals but vacant, empty. So that carbon, I am just showing the same trigonal bipyramidal. Here carbon monoxide. I am showing you deliberately without showing the formal charge, the old pattern. This is in one plane and the other one will be one above, one below. So trigonal bipyramidal geometry, and all these are DT bonds. Therefore, the name of the subject is coordination compounds. Coordination compounds is same as complex compounds, but nowadays people prefer to say the topic is coordination compounds rather than complex compounds. So here, what happens? And interestingly, this complex is diamagnetic. And what happens? How we represent? We represent like this. This will be filled up because once it overlaps with the lone pair orbitals, because these lone pair, which were present, I am not showing again because those individual lone pairs have been already overlapping with the vacant hybrid orbitals of the central atom. So therefore, to indicate that, so we have a different sign. The electron pairs have come from carbon monoxide, not from iron. So it has a TBP geometry. Interestingly, it is diamagnetic. The complex is diamagnetic. Although iron atom itself is hugely paramagnetic with 4 unpaired electrons, but the complex is diamagnetic. This is called DsP3. You understood that? Why D first? Because it uses n minus 1d, then ns, then np. Got it? Yes, sir. Then we'll go Yes. to sp3d2 and d2sp3. Well, the classic example is sulfur hexafluoride. Steric number when 6, hybridization is ought to be sp3d2 or d2sp3. D2sp3 is only in complexes and coordination compounds, not in normal molecules having no transition metal ions. So sulfur being the 2,2 family,
but it has two excited states. I am taking up the second excited state, where one from the S, one from the P, one from the D has been already promoted to the vacant d orbital. This is 3s, 3p, 3d. So before bonding, this is not the case of coordination compounds where those orbitals were vacant. Now is filled by one electron, unpaired electron. So sp3 d2, and the two d orbitals necessary will be, one is dx square minus y square, the other one has to be dz square, because that is the only orbital where at least two lobes lying along z axis, and the torus lie in the xy plane. Some of them are in the axis, x and y axis. Some of them are little away, doesn't matter, but dxy, dyz, dzx, all the four lobes are lying in between the axis. They are not fit for mixing well. So there will be sp3d2 hybridization and octahedral geometry, as you know, OH geometry. OH means octahedral, and earlier we were doing only giving dash, but now we shall be giving Mundo Lanza, Mundo Lanza, Mundo Lanza, Mundo Lanza. So four will be directed towards the four corners of a square, and one up and one down. Each contains an unpaired electron. And as usual, fluorine will come from the respective direction with its p or p orbital, just like chlorine. So you have SF6, four SF sigma bonds lying along this, and one up, one down. But unlike trigonal bipyramidal geometry that we saw in PCl5, in octahedral geometry, that is most of the time in normal molecules without having a transition metal ion, that too some specific transition metal ions, they are regular octahedron. That means you can visualize three octahedron in different directions. If you take these as square, then this is up and down, up and down. This is one. Now see, I'm changing. I will make another 4 as square. Supposing, oh my God. Supposing I will make these as square. Not looking like square, it looks like a rectangle, a square. You know, then this is up and this is down. Same thing will happen if I make these as square, then this is up and this is down. I'll show you sometimes in the real model. You can visualize three octahedra in different directions. One is horizontal plane, up and down. One is plane like this, up and down. One is plane like this, up and down. So it is a regular geometry most of the time, and all the SF bonds are of equal length, equal strength, unlike PCl5, which is elongated because of axial and equatorial bonds. Later I'll tell you why it happens, why the distortion happens in PCl5, in sp3d, not in SF6. Now D2 sp3 is in complexes. Supposing we will take cobalt, say, cobalt this complex. This is called hexamine cobalt 3 complex.
So beautifully colored ion. There are six ammonia as ligands, each of which will furnish a lone pair to form a dative bond, coordinate covalent bond, and cobalt is in the 3+ state. Unlike the previous example, because ammonia is neutral, cobalt has to remain in the +3 state. So we have to write the configuration of +3 of cobalt. Cobalt is 27. So three electrons have to go. This is 3d7 4s2. This is cobalt. But cobalt 3+, first the 2 electrons will go and then one of them will go. So leaving behind 6 electrons, just like iron neutral atom. 6 electrons, and if we arrange them, there are 4 unpaired electrons. And then as this is 3d, this is 4s, has been made vacant because we are taking 3+, not the atom. And then 4p is already there vacant. 4s has gone because of ionization. But when complex occurs, the 6 ligands approach and form coordinate bonds, then they have to reorganize. So we'll form 2 more pairs and make 2 d orbitals vacant. The same dx square minus y square and dz square vacant. And so that d2 sp3 hybridization will occur to octahedral geometry. And obviously, the ammonia lone pairs will be occupying by overlapping these hybrid orbitals. They will be forming sigma bonds. So this is D2sp3 hybridization. And this is, interestingly, this is diamagnetic. Cobalt 3+ is paramagnetic like iron neutral atom. Same, 4 unpaired electrons. But once it complexes with ammonia, 6 ammonia ligands and makes a octahedral complex. If the coordination number is 6, I told you, there we say SN. But in complexes, it is called coordination number. If the number of ligands is 6, then definitely the hybridization is sp3d2 or d2sp3. Most of the time, d2sp3, depending on the type of ligand. If this ligand is strong, then d2sp3. It can be able to pair the inner electrons and make room for d2sp3. If the ligand is weak, we'll discuss about that in details, which are weak ligands, which are strong ligands. Then for example, like water, aqua complex, water. And like chloro complex, fluoro complex, these are weak ligands. In such complexes, they have no capacity to, pair the inner D. Instead, they will go for the normal sp3d2. What we have already studied that happens in normal molecules without involving any transition metal complex. So these things will be more and more clear as we continue our discussion. And then the last but not the least is sp3d3. It has no counterpart. D3sp3 is very rare complexes. I will not give any example of that. But normal, supposing IF7, when the steric number is 7, the hybridization is bound to be sp3d3. Now, iodine being an halogen, in the excited state, all the three lone pairs have been unpaired. So this has gone, this has gone, this has gone. So there will be 3 and this will be 1, 1, 1. Because it was 3, 1. Now it will be 0, 7. 3, 1, 2, 3, 1, 5, 0, 7. Then before sp3d3. Now here, in addition to dx square minus y square and dz square, you can take any of the other d.
it could be dxy. It will cater to x, close to x and y axis. You can take yz, they're close to y and z. You can take zx close to z. So you have to take one of the angular, other out of them, you have to take any one of them and to form sp3d, 3 hybrid orbital. And this time I will not draw, I will just show you that pentagonal bipyramidal PBP geometry where so iodine sits here, and I am not showing the orbitals. Mundo lancha kariki ma hato katilani. So the one other will be up and the other one will be down. And fluorine will be sitting here. This will be bit, this axial and equatorial kind of concept comes here. Only when it is a square base, then there is a regular. But if it is a triangular base or a pentagonal base, then it is irregular. Axial bonds are of one type and the other equatorial bonds lying in one plane are of other type. You can make another pentagon in other direction, just like we made in octahedral. And last but not the least, are korjuna dhulilani? Yes, sir, କରୁଛୁ। ତ ମମି ଆସିକି ଦେଖୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କଲେଣି ବିସ୍ମୟ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଆସିକି ଚେକ୍ କଲେଣି? ନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ ଦୁର୍ନୀତି, ତୁମେ ତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ କରିବି DsP2, ତାର corresponding sp2d, now people are talking of DsP2 ଜାଗାରେ sp2d ହଉଛି ବୋଲି, but it is debatable. DsP2 is very popular and maybe you will not find sp2d in any book now. If you find, you tell me. Now this only in complexes or coordination complexes, compounds. Say a complex of nickel, coordination number 4, because 1, 1, 2, 4 hybrid orbitals will be created. So the coordination number has to be 4. Where nickel is in the +2 state because cyanide is -1. So 4 cyanide -4, this is +2. The net charge of the complex is -2. So now let us focus on nickel because it is using vacant orbitals. Just like you have this hexamine cobalt. This is called tetracyanide ion. We'll talk about that. The nomenclature, how to name inorganic complexes. Now nickel is in the +2 state. Nickel normally is 3d8 4s2. This is nickel 0. But once it is nickel 2 plus, it becomes only 3d8 and 4s0. Now if you draw the structure of, the configuration of this thing, there will be poly. So there will be 2 unpaired electrons in the D, and this has already gone. This has already gone. But P is there. This is 4s, this is 4p vacant, and this is 3d. Now this is nickel 2 plus, but once it complexes with cyanide ion, 4 cyanide ions, and forms the complex, what happens? This will come and pair and make 1 dx square minus y square empty for hybridization. So the internal pairing happens and the complex as usual becomes diamagnetic. This room is vacant. Now out of the 3, it takes 1d, that is dx square minus y square s, and only 2p.
px, py, and this is dx square minus y square, and this is s. So this dsp2 hybridization occurs so that the geometry is completely different. This gives square planar geometry. As such, कटी काटिकी भूत पाई नुहे, भूत कटी काटिकी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लानर होता दीटा भूत ऊपर तले रोते. So it's not like that. It has a square planar geometry. So nickel is here, mundo lanzo, mundo lanzo, mundo lanzo in the square plane. Then asila এটা vacant orbital ଆସିଲା ସିଆଡୁ ମୁଁ ଆଉ orbital overlap ଦେଖଉନି. cyanide ion ଆସିଲା, ତାର lone pair ଅଛି, overlapping କଲା, and you have a square planar geometry. So এটা nickel, not only it is square planar geometry, I will write sp, but also it is diamagnetic. Nickel ion as such is paramagnetic without complex. If it complexes with cyanide ion, then it becomes diamagnetic. Nickel ion is paramagnetic, but nickel's complex with cyanide ion is diamagnetic. And the hybridization is dsp2. Got it? I guess so. Yes, sir. Now we shall move to the details of the pi bonding. We'll see pi first normal, then back bonding. We have seen it normal. There are normal, usually p pi and p pi d pi. The d pi is uncommon. So for example, ମୁଁ कार्बन डाइऑक्साइड देवी, तुम जापर जो दीटा पाई बॉन्ड ये गोटे पाई अच्छी ये पाई अच्छी से कौ टाइप पाई बॉन्ड तुम जो खोलीदेव जानब कार्बन कार्बन रोचे 2s1 2p3 in the excited state. So को हाइब्रिडाइजेशन हम आग हाइब्रिडाइजेशन टा इंपोर्टेंट तापर जानी परिबो कोटा एथरे गोटे एथरे तीनटा को हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन हैं इसमें हैं स्वयं अरे कार्बन सेंट्रल एटम रो हैं SP. एते SP. समय लगुच एसपी कहू. अरे ये एपटे गोटे गणा हम एपटे गोटे गणा हम लोन पेयर तो नहीं डबल बॉन्ड एक नि स्टेरिक नंबर 2 हेले एसपी ना लिनियर केमती हो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लिनियर. किंतु जेहेतु एसपी हैला हाइब्रिडाइजेशन टा गोटे एस गोटे पी px py pz सेमती अच्छी. सो sp हाइब्रिडाइजेशन हैला py एंड pz ता रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रे अच्छी. सो से माने कोन करिवे जो ऑक्सीजन अच्छी मु देखू नहीं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखू नहीं देखी एटी ऑक्सीजन जो अच्छी 2 ये गोटे ऑक्सीजन एटा कार्बन या गोटे ऑक्सीजन. तेणु जदि एटा पी वाई सांगरे एटा पी वाई धर एटा को धरिया पी वाई ता सांगरे ओवरलैपिंग कला साइड वाइज ओवरलैपिंग कला देन विल फॉर्म पाई बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल सांगरे सिग्मा बॉन्ड कला एपटे गोटे सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड्स एपटे गोटे सिग्मा सेपटे गोटे सिग्मा. हाइब्रिड बॉन्ड कैन नॉट एंटर इनटू पाई बॉन्डिंग एपटे गोटे दला ता सांगरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म्स ए सिग्मा बॉन्ड विथ ये pz संगे जो सिग्मा बॉन्ड कला तो ये संगे यार जो py लगे आ संगे py then pz is forming a sigma bond.
So A oxygen ର ନା ମୁଁ ଓଲଟା କହିଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି ଇଏ କଣ ଯାଉଛି এইটার যদি PZ PY यूज ହେଲା ଆ ସାଙ୍ଗରେ PY ସାଙ୍ଗରେ ଟୁ ଫର୍ମ ପାଇ ବଣ୍ଡ ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି PZ ଯାଇଥିବ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ କରିବାକୁ এইটা ନୁହଁ ତେଣୁ PZ ଯାଇଥିବ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଧର PZ ଆସିଲା ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ବିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ କଲା କିନ୍ତୁ PY ଅଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଇଟ୍ ସେ କଣ କରିବ କାର୍ବନରେ ଯୋଉ ଅନହାଇବ୍ରିଡାଇଜ PY ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ପାରାଲାଲ ହେଇଯିବ ସାଇଡ ୱାଇଜ ଓଭରଲାପିଂ କଲା ତେଣୁ ଇଏ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ହବ এটা ধর PY এটা PZ यार PZ सिग्मा बॉन्ड करथिला आर PY सिग्मा बॉन्ड कला एंड PZ संगरे यार PZ वैकेंट अछि या संगरे एटी पाई बॉन्ड कला सो जेहेतु कार्बन रो डी ऑर्बिटल नाही कि ऑक्सीजन रो डी ऑर्बिटल नाही तेणु P पाई D पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग टी संभव नुहे दीटा जाक बॉन्ड P पाई एपटे पाई P पाई अरे बुझिलो ना ऑर्बिटल डायग्राम करिक देखैबी आगे सर सर बुझिएला बुझिए मझी कार्बनटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करछि मुंड लांज एपटे मुंड लांज ए ऑक्सीजन टा धर px सॉरी py ऑर्बिटल को डायरेक्ट ओवरलैपिंग कला तार pz टा रही गला परपेंडिकुलरली रही गला तेणु कार्बन रो जो दीटा अनहाइब्रिडाइज अछि pz थर ए डायरेक्शन टा pz आमे नै छै तो से समय रे pz संगे pz ओवरलैपिंग हे गला गोटे पाई बॉन्ड सेपट ऑक्सीजन रे PZ এটা যদি কোন কইଥିଲି এপটটা কোন সিগমা বন্ড কিଏ করଥିଲା আরে सर এপটটা पीजेड और कार्बन एसपी PZ করଥିଲା PY পাই বন্ড করଥିଲା এটি PY আসিব ডাইরেক্টলি টু ফর্ম এ সিগমা বন্ড and PZ they will be running for side wise overlapping to form a pi bond ये एमिति ए पाई बॉन्डटा PY ভিতরে ए पाई बॉन्डटा PZ ভিতরে because the other p orbitals on paired electron containing p orbitals are engaged in sigma bonding. Got it? आगे सर यस सर You can also think of in a different way that oxygen is also using 1 2 3. You can say 1 2 3. It is using sp2 hybrid orbital. So out of which one of them is remaining unhybridized and one of them, two of them are carrying lone pairs. Now, supposing we talk of oxygen as a hybrid orbital, now see how we can also explain oxygen. sp2 এটি হব কারণ স্ট্রিক নম্বর ଅଛି ଗୋଟେ ରହିଲା ଧର ଏଇଠି ରହିଲା pz ଟା এই ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲାନାର ହେଲା ସେଥିରୁ ଦିଟା ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ବିଟାଲରେ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ବିଟାଲ ୟୁଜ କଲା ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ PZ ଟା ରହିଲା ଆର PZ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ ୱାଇଜ ଓଭରଲାପିଂ କଲା ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତାର PY ଆସିଲା ନ କରିକି ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ବିଟାଲ ବି ଆସିବ বিকজ অক্সিজেনটা ছোট অ্যাটম তেণু সে মধ্যে হাইব্রিড অরবিটাল ইউজ করিপারিব সো দ্যাট the two lone pairs will be staying not in one of them in S the other one in P but also they will stay in two hybrid orbitals. What hybrid? sp2 hybrid orbitals. Got it? अरे बुझिल सर किंतु आगे सर यस सर हाँ सर ये हम तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड जोड़ा अच्छी ସେଇଟା କାର୍ବନର ଯୋଉ
ये सांगरे ओवरलैपिंग कला हाँ पचार सर हाइब्रिडाइजेशन जो आरंभ को सेତେବେଳେ ତ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ हम्म ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଲା କାରଣ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଗୁଡା ଅଲଗା ଥିଲା ତ ସମାନ ହବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। तुम कथा मु शुणी पारुनी ठीक से सर हाइब्रिडाइजेशन ର କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା ସେଥିରେ ତ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ର ना ଇକ୍ୱାଲ ना ना କରିବାକୁ ଆଉ ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ना ना बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करिवो आउ गोटे थ्योरी ताको रेजोनेंस जोटा तार अधा पार्ट रहिबो VBT रे आउ इंटरेस्टिंग पार्ट रहिबो MOT रे एगर माउसी से एगर PUC सो रेजोनेंस जो आसीबो जे ए लुई स्ट्रक्चर टा भी 100% नुए से 100% भी ठीक ये भी ठीक किंतु प्रकृति रे कोटे एक्चुअल इज ए हाइब्रिड ऑफ दी टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तेणु बॉन्ड लेंथ जो चेंज हुए जो प्रकृति रे जहाँ तुम लुई स्ट्रक्चर लिखिछ गोटे डबल बॉन्ड लिखिछ देखिला सेटा तार बॉन्ड ऑर्डर 1.5 गोटे सिंगल बॉन्ड लिखिछ किंतु प्रकृति रे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तो सेही जिनस गोटे ट्रिपल बॉन्ड लिखिछ देखिला तार कमिक 2.5 सेगुड़ा को एक्सप्लेन करिवो रेजोनेंस किंतु VSEPR थ्योरी जेमती without involving any orbital एका जिनस एटा VBT टा but involving orbitals normal orbitals हो pure बा hybrid orbitals हो they will explain the shape only and bond angle वो क्वेश्चन ର आंसर मु देली ना अन्य कोन कहिली ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। बॉन्ड लेंथ कथा मु आदु कहिनी मु आर द मोस्ट मु बॉन्ड एंगल कथा जागा जाइछि एंड शेप कथा जाइछि बॉन्ड एंगल ए बॉन्ड लेंथ आसीबो रेजोनेंस ओके तेणु ऑक्सीजन कैन यूज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोथ द ऑक्सीजन तार संगे आर ऑक्सीजन टा एटा ऑक्सीजन गोटे एटा सेकंड ऑक्सीजन टा तार सीए कौन करिवो ना PY को साइज के रखिवो कारण PZ रखिछि कार्बन रो PZ संगे पाई बॉन्ड होवा पे तार बुझि परलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये भी sp2 हाइब्रिडेशन हबो किंतु एटा PY टा रखिवो Z टा को मिसेबा को दबो सो सेमती हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करिवो कंटेनिंग ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन आउ दुईटा हाइब्रिड ऑर्बिटल रे लोन पेयर रहिबो एंड नाउ द p bond will be between PY unhybridized PY of this oxygen and the unhybridized PY of carbon so that you have another pi bond got it Against ଆଜ୍ଞା it. ସାର୍ now बतन देखेबी examples where p pi d pi happens then back bonding कथा कहबी बैक बॉन्डिंग बहुत एग्जांपल रे आगु को हमर भिन्न भिन्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन रे बैक बॉन्डिंग कथा बारंबार पढ़िबो से तुम जानी परिबो परीक्षा रे पढ़े गोटे गोटे परीक्षा रे पढ़े एथरे केतेटा पी पाई केतेटा पी पाई डी पाई अछि तोर नाइट्रेट आयन कि नाइट्रिक एसिड जहाँ भी हो गोटे नॉर्मल डेटिव बॉन्ड थिला गोटे हाइड्रोजन आयन जाइकरी करछि बट व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन कोन आरो नाइट्रोजन रो अरे Sir, sp2. sp2 स्टेट नंबर 3 माने sp2 तेणु जो अच्छी ये जो पाइबनटा आखि बुझी कहीदेव आर तो कहा तो डी ऑर्बिटल नाही से जो पाइबनटा निश्चय पी पाई हेतिबो एटा कहवा बाहुल्य सेंट्रल एटम जदि खोलीदेव नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन तो केबे एक्साइटेड स्टेट को जाए नहीं तार वैकेंट डी ऑर्बिटल नाही किंतु sp2 हाइब्रिड यूज करिवो बाध्य सी सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिड यूज करिवो यूनिफॉर्मली बिकॉज द बॉन्ड एंगल टा 120 डिग्री एक्सप्लेन करि परिबोनी सेपटा को ट्राइगोनल प्लान एक्सप्लेन करि परिबोनी जदि सेंट्रल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज न करूची तेणु एटा रही गला गोटे p धर एटा रही गला p z टा रही गला यार p z टा रहिबो जदि याकु भी कहबो sp2 हाइब्रिड ये भी 1 2 3 ये भी sp2 ये भी sp2 तार मध्य रखि दबो सी p z सो देयर विल बी p पाई
ହେଲା ନର୍ମାଲ ପି ପାଇ ପି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇକିରି କହିଦବ ଯେ ଏଟା ହବ କି ନାହିଁ ହେଲା। Yes, sir. Again, sir. ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ଦିଟା ଯାକ ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିଦବ ଆଉ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପି ପାଇ ଯଦି ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଧର ମୁଁ କହିବି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ। ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ଯୋଉ ହିରୋମାର୍କା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 0,6 କମ୍ବିନେସନ ରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ହଉ କି ସଲଫେଟ ଆୟନ ହଉ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହେଁ। ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡରେ ତ ସବୁ ସିଗ୍ମା ହବ। ସଲଫରରେ ପୁଣି କଣ ହବ ନା ସେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବନି ସେମିତି ପେୟାର ଗୁଡାକ ଡୋନେଟ କରିବ ଟୁ ଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ ଅଫ oxygen which will make one orbital vacant, by shifting the two unpaired electrons to one room and one room will be made vacant ଯେମିତି ତମେ ଦେଖୁଥିଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସେମିତି କରିକି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ସୋ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସଲଫରଟା ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ପାଇବଣ୍ଡର ଦିଟା ଯାକ ପି ପାଇ ନା ଗୋଟେ ଡି ପାଇ ଗୋଟେ ପି ପାଇ ନା ଦିଟାକ ଡି ପାଇ ସେଟା ଜାଣିପାରିବ ସଲଫର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ 3s and 3p and it is sp3 steric number 4 ମାନେ sp3 hybridization ହଉଛି ତେଣୁ 2 କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ 0,6 କମ୍ବିନେସନ ହଉଛି ତେଣୁ d ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଠୁ ପ୍ରମୋଟ ହେଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ d ରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି 2 will be converted to 4 unpaired electron 1 in s 3 in p ତେଣୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଭାରି ନାଉ sp3 hybridization ହବ strict number 4 ମାନେ sp3 hybridization ହବ tetrahedral geometry ହବ मेन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो बट व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड ऑक्सीजन लिखिबो का संगे रहउछ ऑक्सीजन संगे गोटे ऑक्सीजन तार मध्य जदि लोन पेयर दबो तार भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 तार तो किसी दरकार नहीं तार तो प्रमोशन हो पारिबनी तेणु अनपेड इलेक्ट्रॉन गुड़ाक पी रे अच्छी पी वाई एंड पी जेड धर अच्छी तेणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन कला गोटे से जदि सिग्मा बॉन्ड आमर चारिटा सिग्मा बॉन्ड दरकार ये दीटा ऑक्सीजन नहीं जाउछंती गोटे गोटे ऑर्बिटल आउ गोटे गोटे जो ऑर्बिटल अच्छी सल्फर रो सी आ संगे सिग्मा कला ये आ संगे धर पी वाई तो नो हाइब्रिड ऑर्बिटल संगे सिग्मा कला आउ गोटे सेमती एपट आडू जो अच्छी से सिग्मा कला किंतु ये जो पी जेड संगे यार डी सो साइड वाइज ओवरलैपिंग हबो सो एटा पी पाई डी पाई हवा को बाध्य सेमती आउ गोटे ऑक्सीजन जो अच्छी ऑक्सीजन तारी भी अवस्था सेया सी कौन करथिबो ना आउ गोटे ऑर्बिटल को देथिबो पी एटा जरे पी जेड ये एटा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सासे ओवरलैपिंग बढ़िया से हबो आउ एटा जदि पी वाई ताहले एटा पी वाई छाड़िची एटा पी जेड छाड़िची एटा पी वाई छाड़िची कि पी एक्स छाड़िची तेणु सेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सागरे हबो तेणु एई बॉन्डटा बी पी पाई डी पाई सो दीटा जाक पाई बॉन्ड दे आर ऑफ so both the bonds are p pi d pi so एथिरे p pi d pi दीटा ଆଉ p pi 0 हाँ गोटे जदि अनपेड इलेक्ट्रॉन था p रे अनहाइब्रिडाइज्ड आउ गोटे था d रे ताले गोटे p पाई आ गोटे p पाई d पाई हबो जेमति हमें देखिबा आ गोटे केस रे सेई भलिया किंतु एठी तो दीटा जक अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि सेंट्रल एटम रे d रे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाउछि sp2 होइथिले गोटे कथा होइथांता गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन p रे थांता सो गोटे p पाई हेई पार थांता जोटा को हमें देखिबा एटा कर सालनी Again, sir. Okay, sir. SO3 रे देखिबा
पूरा लास्ट को नहीं जावा तीनटा जाक डबल बॉन्ड विथ नो लोन पेयर in on sulfur. So it will be sp2 hybridized, steric number 3. In that case, sulfur गोटे unpaired electron p रे छाड़ दो d को दीटा जाइछि बारी ऑलरेडी जेमति हम करथिले sp2 hybridization हबो किंतु गोटे धर pz रे रही गला एठी आउ रही गला d रे दीटा तो तेणु गोटे ऑक्सीजन सागर ऑक्सीजन सब पी रे रहिबो गोटे ऑक्सीजन सागर धर पी पाए हैला गोटे रही आरो दीटा पी पाए हो कि नहीं Again, sir. सो Yes, sir. पी पाए एठी गोटे एंड पी पाए डी पाए दीटा आर यू फॉलोइंग मी Yes, sir. Yes, sir. similar way you can predict by drawing the structure homework mu deli chlorate ion रे maximum लिखाई तो maximum कारण तुम जदि आरटा नेटिव बॉन्ड कॉन्सेप्ट नब कमी जीवो मैक्सिमम केतेटा पी पाए और केतेटा पी पाए डी पाए बॉन्ड केते रहइबो करिवो देखैबो क्लोरेट आयन रे तो देखिबो जदि पी रे किछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न रहिला सबुडा पी पाए डी पाए जदि पी रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिबो हाइब्रिडाइजेशन जदि sp2 हबो कि sp हबो ताल निश्चय पी पाए होइबो sp2 हेले गोटे पी पाए एटलिस्ट रहिबो जे sp हबो sp2 हेले गोटे रहिबो sp हेले दीटा पी पाए रहिबो जदि बाहर पेरिफेरल एटम लिगेंड्स जोड़ाक जदि सेकेंड पीरियड एलिमेंट हेथिबो बर्तमान बैक बॉन्डिंग देखिबा बैक बॉन्डिंग रे कांसेप्ट मु दीटा एग्जांपल रे दे दूची गोटे हला पी पाए बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन पाई बैक डोनेशन एथरे कौन हबो वन p orbital contains a lone pair and the other is empty is vacant सिद्धि बैक डोनेशन वाटा यूज होला डेटिव बॉन्ड भलिया ताको डेटिव बॉन्ड केही कहंतिनी ताको बैक डोनेशन बा बैक बॉन्डिंग कहंती बट इज इक्विवेलेंट टू पाई डेटिव बॉन्ड इट इज इक्विवेलेंट टू पाई डेटिव बॉन्ड इक्विवेलेंट टू साइन दोजी बट डेटिव बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड पे यूज करे जाय से जो टर्म ता माने मु देखै दोची गुटे p ऑर्बिटल वैकेंट अछि आ गोटे p ऑर्बिटल पाखु को आसीबो मु देखौनी एकदम ओवरलैपिंग करबा इट कंटेन्स ए लोन पेयर एंड ता भीतर जदि ओवरलैपिंग हबो एटा वैकेंट एटा लोन पेयर अछि तांको भीतर जदि ओवरलैपिंग हबो देन सेटा हला बैक डोनेशन बुझियला Yes, sir. Again, sir. गोटे एग्जांपल देले जानि परिबो BF3 रो हमें सिना लिखि देले BF3 टा सीधा किंतु सेतरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अछि बिकॉज़ सम पाई बॉन्ड कैरेक्टर इज देयर एठी ये गोटे स्ट्रक्चर हबो ये गोटे स्ट्रक्चर हबो ये गोटे स्ट्रक्चर हबो दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सो and therefore ना ये करेक्ट ना सी करेक्ट ना सी करेक्ट सो एक्चुअल स्ट्रक्चर सब चिता है जो हम देखिबा सो सिंगल बॉन्ड ऊपर टिके डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसीबो से जो पाई बॉन्ड टा बंटा है जो बिटवीन थ्री बॉन्ड्स सो दिस इज बिकॉज देयर इज ए p पाई बैक बॉन्डिंग केमति मु देखौची बोरॉन तुम्हें ऑलरेडी मैं कहि sp2 हाइब्रिड गला परे गोटे वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ुची pz ऑर्बिटल टा पूरा वैकेंट अछि तेणु फ्लोरीन एटा हला बोरॉन फ्लोरीन गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि 3 1
तो सीए कौन करियो तार लोन पेयर भी अच्छी तार अन्य पी ऑर्बिटल मध्य दैट इज लोन पेयर एटी you know you have to have a pure p orbital here ଏଠି ତମେ କହିବନି ଯେ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ତ ଏଠି ଅଛି ଇଏ फ्लोरीन तो स्टेरिक नंबर एठी तीनटा लोन पेयर और चारि तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हबो हेले सब गुडा हाइब्रिड ऑर्बिटल रे माने लोन पेयर गुडा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहबे इन सिचुएशन रे जोठी पाई बॉन्ड करिवार आसीबो स्कोप सेठी गोटे हाइब्रिडाइजेशन हेई पारे किंतु ए केस रे हबो नै जेमति तो चारि माने sp3 हबा कथा एठी कोन करिवो ना sp2 मैक्सिमम हेई पारे गोटे लोन पेयर रखि देबो अनहाइब्रिडाइज्ड pz orbital race which will be parallel to the pz orbital carrying vacant orbital so एठी एटा हला सिग्मा बॉन्डिंग रे देला एटा किंतु वन ऑफ देम विल गो फॉर पाई बॉन्डिंग तो देखो मु कोन करूची एठी एठी जो वैकेंट ऑर्बिटल थिला बोरोन रो ताकू गोटे मु चित्र करूची एटा वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन रो आउ एइटार एइटार मध्य pz ऑर्बिटल रे लोन पेयर अछि अनहाइब्रिडाइज्ड because fluorine is small in size so there will be effective overlapping between these two lobes and these two lobes so this pi bond is formed but this pi bond is p pi back bonding because one of them is using a lone pair the other one is using empty or vacant p orbital this is p pi back bonding and ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏପଟେ ବି କରିହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଏପଟେ ବି କରିହେବ କାରଣ ଥରେ କଲା ମାନେ ଆଉ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ ନାହିଁ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଥର ହବ ନ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ବି ପସିବଲ ସେ ବି ପସିବଲ ସେ ବି ପସିବଲ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ନା ଇଏ ନା ସିଏ ଗୋଟେ average an arithmetic average or weighted arithmetic average of the three contributing structures ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏଟା ହେଲା p pi back bonding ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିବ फ्लोरीन जगह जब क्लोरीन नब आउ टे बड़ हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कमिज ब्रोमीन ने आहरी कमिज ब्रोमीन टा आहरी मोटा दूरे आयोडीन टा आहरी मोटा तेणु कौन हम एमाने सबू परवर्ती काल में पढ़ा BF3 है BCl3 से माने लुईस एसिड्स अर्थ है से माने इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करें वैकेंट पी ऑर्बिटल अच्छी से माने इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करें किंतु आम जो कंपेयर करिया BF3 BCl3 BBr3 BI3 लुईस एसिड रो जो स्ट्रेंथ रो ऑर्डर टा इट गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम because of the small size of fluorine is maximum so that eta vacant orbital jodi use he gala by back bonding it will not be available to accept electron from outside source so as a Lewis acid it will be the worst aste aste Lewis acid strength body jibo as the extent of overlap or the extent of p pi back bonding will be less and less Lewis acids are those which can accept electron pair. So BF3 accept करी परिबनी भल से कारण से तार एम्प्टी ऑर्बिटल को यूज कर देछि करियो केम बुझियला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ देखो इंटरेस्टिंग जिंस देखो BF3 अच्छी ताको F माइनस संगे मिसिले से गोटे कॉम्प्लेक्स दबो एटा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नुहे किंतु गोटे कॉम्प्लेक्स दबो BF4 माइनस देखो हाइब्रिडाइजेशन टा sp2 थिला इटी फटकिनी sp3 हे जिवो एटा TD एटा स्क्वायर प्लानर ए सॉरी ट्रायगोनल प्लानर TP सॉरी ट्रायगोनल प्लानर एटा TD ज्योमेट्री हे जिवो
So undoubtedly मन रखिथा यदि bond length पचरा जीवो BF3 और BF bond और BF3 रे और BF bond in BF4 minus. Hybridization makes a very important role. More is the percentage of S character. ପରେ ଆମେ ପଢିବା. More S character, stronger is the bond. S ଗୁଡାକର penetration power ସବୁଠୁ ଅଧିକା. ତାର ତାର angular node କିଛି ନାହିଁ. So stronger the bond. Bond strong ହେଲା ମାନେ lesser the bond length. Bond ଟା strong ହେଲା ମାନେ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ମାନେ bond length କମିଯିବ. So bond strength and bond length, they are inversely related. Lesser the bond length. ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ BF3 ର bond length ଟା ଟିକେ ଅଧିକା କମ. Because sp2 S character ହଉଛି 33.33% and 25% S character. S character कमिला माने bond will be weaker and longer. So this BF is bond length BL longer. 80 BL BF shorter. Bond strength are altered. Because of the double bond character ରହିଲା जो ଚିତା କଟେଇଲି double bond character ସକାଶେ stronger ହେଇଗଲା bond shorter ହେଇଗଲା. Hybridization through ରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବ. ଏବଂ ଏଠି back bonding ସକାଶେ pi bond ଆସିଗଲା double bond character ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପାଇଗଲେ ସେ through ରେ ମଧ୍ୟ explain କରିପାରିବେ. ଏମାନେ ସବୁ single bond. BF4 minus ରେ all single bond, no p pi back bonding, nothing. ଏଟାର ଟିକେ double bond character ଅଛି ତା ଛଡା hybridization through ରେ ମଧ୍ୟ explain କରିପାରିବ. And last but not the least is p pi d pi. खाली गोटे गोटे एग्जांपल देखौची. देखो ये गोटे कंपाउंड ट्राइमेथिलामीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ता नाइट्रोजन लोन पेयर अछि. तारी काउंटर पार्ट होची कार्बन जगह सिलाइल नेबी SiS3. इट भी लोन पेयर अछि. अब कहते ट्राइमिथाइलामीन এটা ট্রাইসিলাইল অ্যামিন. সিলাইল সিলিকন রু সিলাইল অ্যামিন মিথাইল সিলাইল. কোন হଉଛି এଠି কোন হଉଛି নাইট্ରୋଜେନ ର উল্টা কাম হଉଛି এଠି. সেটি কোন সেন্ট্রাল আটম রে ভ্যাকেন্সি থিলা. এটি সেন্ট্রাল আটম রে ইট কন্টেন্স এ লোন পেয়ার and that lone pair will be definitely stay যদিও এটি যেহেতু লোন পেয়ারটা ইউজ হয়ে যাଉଛି এটা it has to stay in an unhybridized orbital. ସେଥିପାଇଁ ଏଠି hybridization ଟା କାହାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର sp2 कॉलेज एंग्री pz orbital टा रहिबो not vacant, is unhybridized. I am not saying vacant. It contains a lone pair and hybrid orbital manakare rahibo unpaired electron and they will go for normal bonding. And you know the shape of this is trigonal planar. Can you imagine? Steric number 4 heikri B. Tetrahedral way trigonal planar because one of the lone pairs is staying in unhybridized pz orbital. The other is sp2s nitrogen contains a lone pair. नहीं से लोन पेयर तो अच्छी pz को हटी गलानी से pz को हटी गलानी हाइब्रिड हला पर की कोट रहबो तो मिसी गलानी ना तेणु एस गोटे पूरा फैकेंट कर देला से इलेक्ट्रॉन दीटा को pz को पळेला से वैकेंट कर देला सी आउ कोन ना तीनटा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिला से तीनी आउ तीनटा रो दीटा ऑर्बिटल आउ ये वैकेंट और बेसिकली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले गोटे 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 रहि गेले हाइब्रिड ऑर्बिटल रे गोटे गोटे रहि गेले तीनटा ऑर्बिटल रहि से माने सिग्मा बॉन्ड कोले का संगे ना सिलिकॉन संगे
सिलिकॉन संगे सिग्मा बॉन्ड हो गला बट व्हाट अबाउट द पाई बॉन्ड ये जो रहिला ता संगे रे सिलिकॉन इज ए 3D एलिमेंट तार वैकेंट d ऑर्बिटल अछि pz ले एटा definitely the d orbital should be either z थिला वाला either you know in between the axis अछि एटा अछि जा भी हेले भी d yz की d zx yz z जेंत रहइबो so any d orbital which is parallel so एटी overlapping करिबो side wise d pi p pi so here d pi p pi here this is vacant and this is occupied nitrogen ro lone pair achi in an unhybridized orbital and एटा vacant orbital silicon is a third period element तार you know 0 4 कॉम्बिनेशन यूज होची तीनटा हाइड्रोजन पाई आ गोटे नाइट्रोजन पाई तार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होची गोटे तीनटा हाइड्रोजन पाई आ गोटे नाइट्रोजन पाई किंतु बाकी जो डी टा कंप्लीटली वैकेंट अछि जोटा पैरेलल को आसीबो सी पी पाई बैक बॉन्डिंग हबो फଳରେ कोन होची लोन पेयरटा जेतु बैक बॉन्डिंग यूज हला sp2 हाइब्रिडाइजेशन हला यार शेपटा चेंज हेला ट्रायगोनल प्लानर and it is almost neutral compound it's not basic कहना लोन पेयर रहिले सेटा बेसिक सी दबो लोन पेयर डोनेशन बेसिस लुइस बेसिस आर दोज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन लुइस एसिड्स कहउतली आर दोज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लुइस बेसिस आर दोज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन हमें पढ़िबा एडवांस थ्योरी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन दिस क्लास 11 so किंतु on the other hand it is no back bonding कारण कार्बन इज ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट नो डी ऑर्बिटल से यार हाइब्रिडाइजेशन हूँ sp3 एंड जेहेतु गोटे भूत यार सेप हूँ टीडी एंड इट इज बेसिक लोन पेयरटा सही सलामत अच्छी जदिव हाइब्रिड ऑर्बिटल अच्छी किंतु अच्छी से डोनेट करदब से इट विल एक्ट एज ए बेस बट आर बेसिसिटी ऑलमोस्ट नहीं कहबा गले कारण लोन पेयर इज यूज्ड इन बैक बॉन्डिंग डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग so it is almost non-basic or neutral compound. Got it? Yes, sir. Yes, sir. ଆଉ ଆମେ ପଢିବା in details ଆମେ ପଢିବା ଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ टेट्रा कार्बोनिल निकेल ऑल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हमें पढ़िबा एडा जीरो जेमति पेंटा कार्बोनिल निकेल आयरन टा जीरो रे थिला सेमति टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो रे अछि जीरो माने 3d8 4s2 सही सलामत अछि एटी 1 2 3 4 5 अच्छी सो 3d8 थिला एठी आ गोटे पळे आसला ए जो दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन थिला ये दीटा पळे आसला एठी ओह पी परा आई एम सो सॉरी एठी पी 4s 4p एटा 3d तो 3d टा फुल हे गला 4s रु दीटा इलेक्ट्रॉन चले आसला जेमति आयरन पेंटा कार्बोनेट बढिया तेणु जेहेतु कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हबो केवल आमे देखिथिले साइनाइड कॉम्प्लेक्स रे डी ऑर्बिटल गोटे वैकेंट रखिके dsp2 हेतिला स्क्वायर प्लानर किंतु एठी डी ऑर्बिटल वैकेंट रहिबोनी ई भी डायमैग्नेटिक साइनाइड कॉम्प्लेक्स निकेल रे मध्ये डायमैग्नेटिक थिला सेठी dsp2 थिला स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री एठी sp3d एटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तापर आसीबो किए ना कार्बन मोनोऑक्साइड रो जो लोन पेयर अच्छी कार्बन रो से डोनेट करिवो इन द टेट्राहेड्रल डायरेक्शन and it will form this but what will happen really what will happen how d pi p pi bonding will here also happen nickel एपटे आसला कार्बन मोनोऑक्साइड गोटे टेट्राहेड्रल डायरेक्शन रो एटा आसला गोटे टेट्राहेड्रल डायरेक्शन रो ये आ गोटे टेट्राहेड्रल डायरेक्शन रो लागुची जेमति स्क्वायर प्लानर किंतु टेट्राहेड्रल आसला किंतु निकेल रे जो वैकेंट नहीं लिकेन रे जो निकेल रे
निकेल जो आसला आमे तो निकेल रे कॉन्फ़िगरेशन आमे कले एठी निकेल 0 रो ए जो 3d ऑर्बिटल रे अछि जे कोनसी गोटे पेयर सेई पेयर मु एठी ये करूची से बैक बॉन्डिंग करिवो देखो ये गोटे निकेल रो गोटे अच्छी पेयर ऑलरेडी एटा तो वैकेंट ऑर्बिटल द्वारा डेटिव बॉन्ड हेची जोटा अच्छी सेटा कार्बन मोनोक्साइड रो गोटे एम्प्टी ऑर्बिटल अच्छी आमे पढ़िबा परवर्ती काल रे हमर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रे पढ़ले एटा कहंती एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट एटा एमओटी रे पढ़ा हबो एटा गोटे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अच्छी कार्बन मोनोक्साइड रे पाई ऑर्बिटल पाई स्टार ताको लिखिली वैकेंट यार जो बॉन्डिंग सॉरी एटार जो लोन पेयर अच्छी एठी हाइब्रिड ऑर्बिटल रे जो अच्छी नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो थिला किंतु लोन पेयर थिला अनहाइब्रिडाइज रे पटे पछे पटे अनहाइब्रिडाइज तार आगो पटे अनहाइब्रिडाइज थिला ता संगे एठी कोन कला ना पाई बॉन्डिंग कला साइड वाइज ओवरलैपिंग कला सो एटा मध्य डी पाई पी पाई बैक डोनेशन सेठी सेपटू सिलिकॉन रु आसुला माने जोटा लिगैंड जोटा बाहर रहे लिगैंड रु आसुला सेंट्रल एटम को ना ना नाइट्रोजन नहीं सेंट्रल एटम रु लिगैंड को जाउथला नाइट्रोजन वाज यूजिंग लोन पेयर एंड सिलिकॉन वाज यूजिंग वैकेंट ऑर्बिटल एटी उल्टाटा निकेल सेंट्रल एटम that will use lone pair unhybridized and the ligand will has a vacant orbital called antibonding orbital pi star ता संगे overlapping हबो so this is also d pi p pi but this p is antibonding orbital anyway so because of that the bond order will change single bond नहिकरी single bond रु अधा हबो bond stronger हबो हला बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टा को केबे चेंज करि परिबोनी किंतु बॉन्ड रे आसीजो स्ट्रेंथ आसीजो बिकॉज ऑफ द सो ये सेति पई याकू कहंती ए कार्बन मोनोक्साइड रो ना होजी कोन इट इज ए सिग्मा डोनर तार जो लोन पेयर थिला सिग्मा बॉन्डिंग पई डोनेट करूची बट पाई एक्सेप्टर पाई बॉन्डिंग पई से एक्सेप्ट करूची बिकॉज वैकेंट से सही टाइप रो लिगेंड मानु को कहंती सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स तार दीटा कैरेक्टर अछि लोन पेयर यूज करी सिग्मा बॉन्ड करिवो सिग्मा डोनेट करिवो आउ पाई बॉन्ड पाई से निजर गोटे वैकेंट ऑर्बिटल यूज करी एक्सेप्ट करिवो तारी भलिया साइनाइड आयन मध्य एका ये NO2 माइनस आयन जोटा सब गोटे जातिर सिग्मा डोनर तांकर पाई बॉन्ड अछि निजर पाई बॉन्ड अछि कार्बन मोनोक्साइड रे ट्रिपल बॉन्ड अछि दीटा पाई बॉन्ड अछि सो तार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रे आसीबो गोटे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आसीबो सेटा वैकेंट थिबो हायर एनर्जी ऑर्बिटल वैकेंट थिबो ता संगे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो so that is all about our work on pi bonding जनरल कांसेप्ट हे गला देन हमें ब्रेक करिवा ब्रेक करी नेक्स्ट क्लास रे हमें डाइपोल मोमेंट देखिबा so देखिबा हाउ वेक्टर्स dipole moment is a vector quantity and how we can add them vectorially and the resultant vector will give you the dipole moment of the molecule or an ion as a whole देखिबा molecular dipole moment तब तक बाय Thank you, sir.